Paper Hello, one. everyone. Welcome to another podcast on TagPod. आज की जो मेरी पॉडकास्ट है दिस इज़ अ स्पेशल पॉडकास्ट. आज आई एम एक्चुअली एट सिनर्जी एजुकेशन फैसलाबाद एंड मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट है इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट. मैं उसको उसका बताने से पहले आई शुड टेल यू कि ये पॉडकास्ट है क्या और मैं क्यों बन रही है. On my lectures on YouTube, a lot of my students have been asking कि पेपर कैसे करते हैं, पेपर अटैम्प्ट कैसे करते हैं. सर आप लेक्चर्स दे देते हैं, आप पेपर अटैम्प्ट नहीं करना बताते यूट्यूब पे. तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आस्क अ स्टूडेंट हु हैज़ एक्चुअली अटेम्प्टेड अ पेपर विद न्यू सिलेबस और हम उनसे उससे टिप्स ले लेते हैं कि हाउ डिड शी डू बिकॉज शी हैज़ एन ए ग्रेड इन बोथ द components. So let's talk to her. Hello, Noor. Hi. How are you? Alhamdulillah, fine. How are you? I'm fine. First of all, thank you very much for giving me this opportunity Pleasure. and for agreeing to be a part of Of this course. podcast. Uh, Introduction मैंने आपका दे दिया. Most of my students already know you. My physical students, ये जो YouTube पे बैठे हुए हैं बच्चे students, ये तो they don't know you. They will know you now, but the other students do know you already. रीज़न पॉडकास्ट की यही है कि द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग दे थिंक इज अटेम्प्टिंग द पेपर. दे डोंट नो हाउ टू डू इट. और सिंस सिलेबस हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, इट हैज़ अपडेटेड. तो अब मसला ये है कि अब इवन अगर टीचर्स भी बता रहे हैं ना तो वो हवा में तीर मार रहे हैं. मैं भी अगर बताऊंगा तो मैंने खुद तो नहीं दिया भाई, ये तो अब हुआ ना चेंज. यू आर द फर्स्ट बैच. और ये भी एक बात है बड़ी मानने वाली, you were the first batch and you gave all the papers without any past papers. Your paper was the first past First paper for past the paper. coming batch. So this itself is a very good thing. तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को आप ही बता दो, हाउ डिड यू डू इट, व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए. ठीक है, यू कैन बी अ मेंटोर टू देम. ठीक है. एंड मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि नूर इज सच अ स्टूडेंट कि इसके किए हुए पेपर्स, इसके किए हुए असेसमेंट्स मैं अपने स्टूडेंट्स को एज सैम्पल्स भी देता हूँ. शी इज़ दैट गुड. ओ लेवल्स में आई हैव हर्ड दैट यू हैड अ वेरी गुड रिजल्ट. व्हाट वाज दैट? I had 5 A stars and 4 A's. Is it, if I ask, Yes. is it necessary कि only a student who has 5 A stars and 4 A's. 4 A's in O levels, Yes. only that student can achieve an A in law? No, it's not necessary. You don't think so, right? No, I don't think so. मतलब students, yeah, मतलब they don't have to be scared कि है नहीं यार ये नहीं हम तो that's ऐसे नहीं. that's not a thing because अगर आप internal exams की बात करें, I'll just take a example of one subject. Obviously एक Cambridge के एग्जाम में बैठना और then sitting in like a send up or mock, it's very different because everything is different, yeah. But obviously exam का pressure तो होता ही आपके ऊपर. I had an E grade in my maths का send up in O levels. I got an E. Oh my god. In my Okay. maths का send up. In my physics का mock, जिसको teachers say that this is the assessed grade that we're gonna send to Cambridge, which is a predicted grade जो आपको मिलेगा. We had a mock physics का and I got a D. We had a re-mock, I got a D again. Okay. And then I gave my CIs and I got an A in both physics and maths. How did that happen? Well, okay, here's the thing. First of all, it is to tell people, just because you got a bad grade once or twice or multiple times like me, doesn't mean that आपका अच्छा grade end में आ नहीं सकता, that you're not capable of doing that subject. You can always do the subject if you're dedicated to doing it. And it depends on what your end goal is. If you just want to pass a subject, then it's fine, get a D, it's okay, it's cool. But if you want to get an A grade and if you want to showcase the fact that despite that subject, despite the fact that the subject is not your forte or it's not your it's not your specialty, doesn't mean that you can't excel in it. Those are two vastly different things. And just because आपने पहले कभी लॉ नहीं पढ़ा या पहले कभी उस लेवल की फिजिक्स या मैथ्स या कोई भी एनी अदर सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा, doesn't mean that you cannot perform well in it. It just depends on learning how to tackle that subject. और उसकी specific requirements होती हैं when you
sit in that exam hall and do it. And I will be completely honest, in O2, in O3, and I think to a certain extent even in AS, I did not know how to attempt Cambridge exams. I did not know at all because we are the first children in our family जिन्होंने O levels or A levels किए. So we were the experimental goats of All the right. family, and every all All right. cousins and everybody after us, they get guidance from us. So we also didn't know कि क्या करना है. And all of my peers, I saw, past papers karna and then getting help from your seniors and all of those resources. The internet is a very vast place right now. Your YouTube channel is also a resource for somebody else. And just Yes. like that, जब मैं एएस के अंदर आई थी, यू वर टीचिंग में ऑब्वियसली आई डेंट नो कि मैं यूट्यूब से जाके लॉ पढ़ सकती हूँ. आई डेंट नो कि मैं यूट्यूब से जाके ओ लेवल्स में मैथ्स पढ़ सकती हूँ टू नॉट गेट इन ई एन सेंड अप्स. आई जस्ट थॉट दैट ओके ये बुक है, ये रजिस्टर, आई जस्ट हैव टू डू दिस थिंग. So I think it also depends on your exposure, whether you can perform something well or not. And uske alawa, I think that's pretty much it. It depends on your confidence in yourself as well. Acha, that was cool. Thank you. Noor, thank you for that Of course, it's detailed cool. answer. Uh, अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि हाउ डिड यू एएस गो सिंस आई हैड दिस क्वेश्चन रिटन ऑन अ पेपर, लेकिन अब ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा. वाई? बिकॉज यू ऑलरेडी सेड अ लॉट अबाउट इट. अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं. ए लेवल्स लॉ 9084 पेपर वन. as far as the new syllabus and new pattern is concerned, हमारे पास अब short questions भी हैं. पुराने पैटर्न पे which obviously you don't even know and you don't even have to know, but just for information, essays आते थे 25 मार्क्स के. 5 ऐसे आते थे और उनमें से आपने 3 करने होते थे. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन जिसके अंदर चॉइस ही नहीं है. पहले स्टूडेंट एक इस माइंड से जाता है कि मैं इतने चैप्टर्स करके गया हूँ यार, 3 ऐसे तो निकल ही आएंगे उसमें से. अब स्टूडेंट इस माइंडसेट के साथ अंदर जाता है कि देयर इज अ क्वेश्चन वेटिंग फॉर मी, इसमें चॉइस नहीं है. डू वी हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ दैट? No, you don't have to be scared of that because, acha, ek second. First of all, it is obviously not possible to humanly remember every single micro thing about the whole chapter or the whole syllabus. And secondly, just short questions aate hain. The section B, if you've seen, it has a choice still, which is a very good thing. It does. Section 8 has short questions. I'm personally not a fan of short questions myself, but I feel like the shorter a question gets, the more specific it is, and the more to the point you have to write about it. Because if they ask कि जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है एंड यू डोंट नो, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स गए. अगर वो लंबा है तो आप कहानी थोड़ी बहुत कर सकते हो अंदर एंड यू कैन गेट अ फ्यू मार्क्स. अच्छा, मुझे सॉरी कटिंग यू ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक 2 दफ़ा पेपर हो चुके हैं जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली, और मुझे दोनों पेपर्स में ऐसी फील नहीं आई कि वो बहुत बीच में से कुछ उठा के आपसे 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का पूछते हैं. वो बहुत ऊपर ऊपर रहते हैं. इज इट सो? या दैट इज ट्रू. लाइक जो आपके चैप्टर का नाम होता है ना, दैट इज द क्वेश्चन. What is this? Define this or give an example of this. So it's not something that you have to, like, be anxious about a lot. You just have to know your content, and if you know your content and you have the concept, then you can easily attempt 2 or 4 marks of questions. You should just know how to write it. And I think because, as you said, 2 papers ho chuke hain, studying the marking scheme is very important. What do they want from you? If they're asking for a definition, what elements of a definition do you need to give to them for them to give you 2 marks? Because मतलब you're saying कि मार्किंग स्कीम पढ़नी चाहिए स्टूडेंट्स को. yeah, but not necessarily because we don't have a marking scheme to read, but this is just an advice, and since you have it, why not use it? ठीक है, गुड. और वो जो 2 मार्क्स के ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं, 2 2 2 Four, 2 yeah. 5 6 10 इस तरह आते हैं वो क्वेश्चन, एंड टोटल गेट्स 25. तो 2 2 में तो हम 2 2 वर्ड्स लिख रखते हैं, राइट? जस्ट 2 वर्ड्स, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट. मैं आई हैव नोटिस के 5 मार्क्स में उन्होंने अक्सर 5 चीज़ें पूछी होती हैं, 5 चीज़ों के बारे में पूछा होता है, सम 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस. तो वो भी हम बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं. फाइन. 6 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू माइट हैव योर ओल्ड पेपर इन फ्रंट ऑफ यू. तो 6 में उन्होंने आई थिंक 2 बातें पूछी हुई हैं, either 2 things or 3 things or something. आप मुझे बताएंगे कि उन्होंने 6 मार्क्स में क्या पूछा So होता the है? 6 marks question that I attempted was describe the 3 classifications of criminal offenses. 3 classification. That means they mean कि every classification is of 2 marks. marks, yeah. That makes it 6. तो जो ये 6 मार्क्स का उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, that is
Describe the describe three classification classification of criminal criminal offenses. If offenses. I'm not wrong, that is summary offense, tribal either way और indictable offense. ये तीन offense हैं. नीचे से ऊपर summary सबसे छोटा है, tribal either way. और मजे की बात कि आपके जितने भी क्रिमिनल के केसेस हैं, चैप्टर्स हैं, थेफ्ट से लेके ऑल द वे सेंटेंसेस, वो सारे ट्राइबल आइदर वे ऑफेंसेस हैं एक्सेप्ट आर्सन, Yeah. दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इंडिक्टेबल Indictable. ऑफेंस. तो इस डिस्क्राइब में आपने सिर्फ डिफाइन किया था या इसको एक्सप्लेन भी किया था? Now, first of all, describe and define essentially are very different keywords. Yes, If you're they asking about define, you just need to give an explanation or definition that okay, somebody fences this and story khatam. So when you're describing something, you obviously need to set out like a certain base. When you write the explanation of something or the definition of something, you know, oh, this is summary offense, and then you have to elaborate on it as well. And I think to do that, vital thing is to have a concept on language, a grip on language as well. ओ यस. इस चलो आपने ये पॉइंट छेड़ ही लिया तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ. मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि सर आई कैन नॉट राइट इतनी अच्छी इंग्लिश जैसी डॉन न्यूज़पेपर में लिखी होती है. डू वी नीड अ डॉन न्यूज़पेपर? आई नो नूर, यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश. आपने ए लेवल्स में इंग्लिश भी रखा हुआ है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, यू आर interested in the language actually, not just for a subject. You're interested in it, you're a reader, you're a great speaker. There are a lot of things a lot of students don't have, but they want to study law. अच्छा, you don't have to take it in an offensive way, but I wish कि मैं आपके अलावा किसी स्टूडेंट का पॉडकास्ट करता जिसका ए आया था. मैं मिनाहिल का कर लेता, मैं शेरोज़ के साथ कर लेता, मैं हलीमा के साथ कर लेता, बिकॉज यू आर सो ओवर क्वालिफाइड कि मुझे डर है कि आपको देख के स्टूडेंट्स ये ना समझे कि भाई अगर इस तरह के लोगों का ए आता है ना तो हमारे पास तो कोई चांस नहीं है. आई डोंट वांट देम टू. कैन यू से समथिंग टू देम सो दैट दे डोंट फील इट द वे? Yeah, okay, first of all, अभी हाँ, वन मोर थिंग मैं ऐड कर दूं कि ये जितने स्टूडेंट्स का मैंने नाम लिया है, शहरोज, मिनाहिल, हलीमा, देयर आर लॉट no, ऑफ I अदर know स्टूडेंट्स, that. दे वर माय स्टूडेंट्स जिनके ए स्टार्स आए हैं, बिकॉज वो ग्रेजुएट हो चुके तो उन्होंने A2 भी पढ़ा है ना. ये मैं आपको बता दूं, अपने व्यूअर्स को बता दूं, आपको भी बता दूं, दे वर नॉट एज गुड एज राइटर्स एज यू आर. दे वर नॉट very good at studies. They were not very exceptional at speaking. ठीक है? They just knew what they were writing, hardly managing to not commit a grammar error. There were even grammar errors in their paper. Even अगर grammar errors होते हैं तो उनमें भी इसका मतलब मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये पता चला कि वो इग्नोर कर देते हैं. That means exceptional language is not required. You just have to make sense. अब आप जिब्रिश लिखें बिल्कुल ही कि आपकी सेंस ही कोई ना बने एंड यू एक्सपेक्ट अदर पीपल को आप क्रिएट भी देते, तो पॉसिबल नहीं है. ठीक हो. अब क्वेश्चन इज, जो इस पॉइंट का फाइनल क्वेश्चन है, ये चले शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने ऐसे कर लिए. अब एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन ए के एंड पे और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन बी का ए पार्ट. डू यू अटेम्प्ट द सेम वे? डू यू अटेम्प्ट बोथ द सेम वे? Yes. या ठीक है, तो ये भी हमें पता लग गया कि यू कैन अटेम्प्ट बोथ इन सेम वे. बट और देयर इज वन मोर थिंग कि अब ये एसेज नहीं है, तो यू डोंट हैव टू फॉलो द एसे वाला पैटर्न, द इंट्रोडक्शन एंड द 3 फिंगर रूल एंड द फ्ला फ्ला. वो ओल्ड स्कूल हो गया काम. 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन, द मेन क्वेश्चन, द रियल डील, कैसे करना है? So as you said, you don't have to follow the essay wala pattern, but it doesn't hurt to adopt those things. Yes, it doesn't. It doesn't. And Yes. I think when you're writing any answer which has those kind of marks, 15 marks is a lot. It's a deal breaker or maker, if you think of it that way. I think there's a certain structure जो हर क्वेश्चन या हर मार्क्स की डिमांड होती है. 2 मार्क्स का स्ट्रक्चर फ़र्क होता है, 5 का फ़र्क और 15 का फ़र्क. एंड ऑब्वियसली सिंस इट्स अ 15 मार्क क्वेश्चन, नीड अ वेरी वेल developed structure. And one thing that I realized really helps, and I'm going to take a tip from English language here, is to create keynotes at the side or like a rough mind map. Once you read a question statement, if you're well prepared and you know the concepts, आपको at least key terms पता होती हैं. Because as you said before, the examiner doesn't want Don newspaper वाली English. मुझे भी Don वाली English नहीं आती. I see other people's English within my own school and I'm very impressed and I want to write like that.
But learning is an eventual process, and you never stop learning. It's slow and it keeps on evolving, right? So it's not as if they're sitting in the Cambridge exam tomorrow, and even if somebody's watching that video जो कल बैठा है, doesn't mean that they can still not learn how to structure their answer. It's okay. It doesn't matter a lot. One thing you have to do is that when you read a question statement, you want to realize what they're asking you. वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है? And once you know that, there are certain key terms associated to that answer that will obviously come to your mind because you've read the book, you've read the notes, you've done everything. There are certain key terms जो आपके दिमाग के अंदर आ जाते हैं, you should start writing them down. And obviously, you don't have to follow the essay pattern, but that is, if I have to give an advice, that's what I'll give. कि आपके क्वेश्चन के अंदर स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट हेल्प्स द एग्जामिनर नो दैट योर थॉट्स आर ऑर्गेनाइज्ड. आपके दिमाग में जो आ रहा है बस वो लिख नहीं रहे बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ कैम्ब्रिज एग्जाम which is a law paper and it's a very practical subject, you need to have a grip on that as well. So once you start with the introduction, you know, oh, this is the question, this is what I think of it, not using first person pronouns obviously. You'll say, you know, this is the question generally, these are the aspects of the question. Now we'll start with this aspect first and then you elaborate on it. Now, as I said before, you need to have a certain grip on language for that. And I'm not saying once again you need Don Buddy English. That is not possible because every student, okay, I'm going to divert from the topic a little bit. Every student has a very different set skill. हर किसी के पास हर चीज़ नहीं होती. If somebody is very good at extracurriculars, they might lack in academics a bit. Yes. Somebody who is a straight A-star student might not be very good at football or cricket, and somebody else might be. So that way, as I already talked about my embarrassing grades before, I'm not good at sciences subjects, and even though I'm still taking them, A levels के अंदर भी, doesn't mean that I cannot handle them या मुझसे हो नहीं रहे. I got an A in biology, I get A's in sciences, but I still admit the fact that science is not my forte. I'm a humanities and social sciences person. So it doesn't mean that if I'm good at a certain thing, it means I cannot attempt the other thing or I cannot learn or mold myself to do that. Because the human brain, it's very vast. Okay. If you think of the history of humanity, हम इतना दूर आ चुके हैं. So, you know, it's a slow and eventual learning process. If you start today, after a week or 2 weeks or 2 months, you'll eventually come up with one structure that suits you or one pattern, one time lapse, और उसको आप ऐसा ऐसा adjust कर सकते हो अपने पेपर के हिसाब से. For example, if you want to give 20 minutes with 15 marks a question, और आप शुरू करते हो, it takes you 1 hour to write it, it's fine. You're not giving the paper right now, and you're still learning, right? So you take the 1 hour, you develop a structure, you get it checked from your teacher, you get it checked from anybody who's teaching you, and then they point out the mistakes, you learn from them. That's a very important thing that I have noticed. But if somebody tells you something, you learn from it. Was inherently मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती थी. English was my worst subject until I was in 8th grade, if that makes sense. I was terrible at English. मेरे 90% आते थे सिर्फ. अच्छा नूर, ये सारी बातें हम अगर उठा के पेपर 2 पे अप्लाई करते हैं तो सेक्शन बी ऑफ पेपर 2 भी सेम ही चीज़ है. ठीक है, उसमें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है छोटा और एक 25 मार्क्स का एसे है. हाँ, सिंस दैट इज एन एसे तो उसमें हमें अप्लाई करना होता है एसे वाला पैटर्न. प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर दैट. या यू नीड अ वेरी प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर दैट. इट्स अ introduction and then a 3 body paragraphs and then a conclusion, a very good conclusion. And if I remember, मेरी एक assignment है इसमें मैंने causation का question किया हुआ है, criminal law का, I think. If you could give the link of that over here, or you know, I will. That I think I've read it once again. I personally was very impressed. Oh, मैंने लिखा है. That is a very nice structure to follow because उसमें एक general opening है, then I'm dissecting everything I'm going to discuss, and it follows a very nice smooth flow. So that is a very good sample if you're going to talk about an essay or even a 50 marks question. Obviously, आप length छोटी कर लो, doesn't mean that you have to change the whole thing. Follow the same pattern. I'm not saying कि पेपर 1 के लिए आपको फ़र्क चीज़ सीखनी है, पेपर 2 के लिए फ़र्क चीज़ सीखनी है. It's the same thing. It's just the marks that are different. So you basically have to follow the same thing. Length फ़र्क कर लो, but I'm not saying कि 15 marks है तो एक पेज लिख के आओ. If you're writing 3 pages, that's fine. If you're writing 1.5 page, that is also fine. Quality और quantity दोनों matter करती है. But your focus should be on the quality of the answer and whether you know what you're writing or not. Okay, Noor, thank you so much. I had this question written here कि how difficult or easy law is, but आपके डिस्कशन में that has already been covered. जब हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, तो you think it's not that difficult. You don't need, आपको को बहुत बड़ा सूरमा नहीं बनना पड़ता लॉ में. अब you can get a good grade. हाँ, आपको मतलब बहुत बड़ी छलांगे लगाने की. And I think जितना stigmatized हमने किया हुआ social sciences को, nobody out there believes कि law पढ़ना मुश्किल है. मेरे पास आपके लिए अब 2 फाइनल क्वेश्चन हैं.
because I don't want the video to be very long, plus आपको पता है, इतने लंबे लंबे कॉन्टेंट्स लोग देखते भी नहीं हैं. I want it to be short ताकि स्टूडेंट्स देखें और उससे फ़ायदा लें बस. अगर मैं एक ए ग्रेड ए ग्रेडिंग स्टूडेंट से पूछूं हु इज़ वेरी गुड एट एकेडमिक्स कि विच वन डू यू प्रेफर, इंग्लिश लीगल सिस्टम और क्रिमिनल लॉ? Criminal law. वाई? First of all, English legal system is very verbose. It is very high on reading and it has a lot of content. It's continuous very. I'm not trashing it. इंग्लिश लीगल सिस्टम से याद आया, ये जो मैंने क्रिमिनल लॉ की बात की इससे मुझे याद आया, मैं आपसे ये पूछना भूल गया कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो था, द डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर द सेक्शन ए ऑफ पेपर 2, हाउ डिड यू टैकल इट? आपने पहले सिनेरियो पढ़ा या पहले क्वेश्चंस पढ़े? हाउ डिड यू डू इट? So I think once you read the question, I think it's a general pattern which you have to follow if you are giving any exam जहाँ पे आपको scenario दिया हुआ है. If you read the questions first, and I think जो इस वक्त AS law कर रहे हैं वो O levels में comprehension questions करके आए हैं Northern English. A general advice जो teachers भी देते हैं and which I have followed and I have seen, if you read the questions first, you will know essentially कि आगे आपको content के अंदर नज़र क्या आएगा. So then you view it with that perspective. तो फिर द क्वेश्चन स्टेटमेंट यू गेट अ हिंट कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या मिलेगा इस केस सिनेरियो के अंदर, एंड देन यू व्यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंस्टेड ऑफ कि आपने केस पढ़ा, यू इमीडिएटली गेट टू थॉट्स कि अच्छा ये चीज़ है या नहीं है, देन यू गेट कन्फ्यूज क्योंकि मैं क्या करूँ, देन यू रीड द क्वेश्चन एंड यू आर टेंटेटिव कि ओ अच्छा मेरे दिमाग में दो ख्याल हैं, मैं ये अप्लाई करूँगा तो क्या ये सही होगा, मैं ये अप्लाई करूँगा तो क्या ये सही होगा. यू रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट, you're approaching it with a preset mind, आपको पता है कि इस केस के अंदर क्या आएगा और इसका क्या एलिमेंट टेस्ट किया जा सकता है, तो आप उसको एक सेट व्यू के साथ अप्रोच करते हैं. एंड ऑब्वियसली वो निगेट भी हो सकता है, बट वंस अगेन आई थिंक इट्स बेटर टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन रीड द सिनेरियो, एंड देन एज आई सेड बिफोर प्लान आउट योर आंसर. इट विल टेक रफली 1-2 मिनट एंड कॉन्स्टेंटली कीप वॉचिंग द क्लॉक. आई एम नॉट सेइंग कि क्लॉक देखने में आधा घंटा गुजार दो, बट कीप वॉचिंग द क्लॉक. आई गॉट इट. Last question. Again, Noor, thank you very, very much. I am indebted. You didn't have to do it, but still, you're doing it. इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं. ये जो बैकलैश मुझे भी मिलता है, ये वो यही मिलता है कि स्टूडेंट्स मुझे आके कहते हैं कि सर, एक तो अगर आप लोगों को ये लोग कहते हैं कि ग्रेड नहीं आता, तो मेरे सामने एक स्टूडेंट ही बैठा हुआ है, एक इंसान ही है जिसका ग्रेड आया है लॉ में, और उसका पेपर उसने खुद ही जाके किया था, मैंने नहीं किया. नंबर 1. नंबर 2, स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई लॉयर नहीं बनना आगे जाके तो लॉ क्यों पढ़ें? तो उसका आंसर तो मैं यही देता हूँ हमेशा कि भाई आपका राइट्स का पता होना सिर्फ लॉयर्स की ड्यूटी नहीं है कि आपको अपने राइट्स का और लॉज का पता हो, ये हर इंसान की ड्यूटी है. एंड आई थिंक इस सब्जेक्ट ने आपको भी कॉन्फिडेंस तो दिया होगा, ये सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है. और ये जो मिसकंसेप्शन है लॉ के बारे में कि सिंस लॉयर्स का इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है तो लॉ नहीं पढ़ना, डू यू थिंक कि you are actually keeping a very good subject away from you just because you don't like the profession or just because of your personal opinion? आपका क्या ख्याल है? Yeah, you have seen my transition from O3 to AS and Yes. how I opted for law, the struggle that I went through to say कि मैंने law पढ़ना है. I remember. You're the one who sat with my mother and who Yes. convinced her कि इसको law पढ़ने दें, कुछ नहीं होता. And at that point when I said that I wanted to take law, now I want to do LLB at this point in time in A2, but तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने lawyer बनना है. I just wanted to go towards something which I had interest in. And as you said before कि लोग कहते हैं grade नहीं आता, when I was taking this subject I was told of a million people कि this person, this friend of mine, he gave the paper, he got E, he gave the paper again, उसका दोबारा E आया, वो तीसरी दफ़ा दे रहा है, उसका दोबारा E आया, तो तुम्हारा ग्रेड नहीं आएगा. And this is something I was told and I'll quote it word by word. मैं भी देखता हूँ तुम्हारा लॉ में ग्रेड कैसा आता है. And I have an A grade in law. Yeah, you have an A. So yeah, this is for all the people who said that. तो हमें एक्चुअली सोचना ये है कि who is deciding for our lives? Yeah, Are we exactly. doing it, or have we given the remote control To other people, someone yeah. else? Because at the end of the day, our subject choices and our decisions, people are not going to live with it. We are the ones who are going to live with it, and we are the ones who are going to grow old with it. Yeah. तो जो choices हम करते हैं,
while I'm also the person who gets easily influenced by people, I think there are certain things where you need to draw a boundary Yeah. and you need to enforce your opinion because you're the one who has to deal with the consequences. People will come, they'll give their opinion, they'll impose it on you, and they'll leave. They leave you to deal with the consequences of what happens, whether it goes bad, whether it goes good. तो लोग आपको छोड़ देते हैं. I think there's a certain thing जो आपको खुद भी समझाना पड़ता है that if there is a stigma around something, if somebody else, if you want it to be broken, why not be the person who's breaking it Yes. instead of waiting कि कोई और बंदा आके इसको ठीक करे. Exactly. Be the change that you want to see. Yes. And sometimes I see this thing where we like, oh, I wish when I was a kid, I wish I had an adult like this in my life. How about you be the adult in some other person's life like that? Brilliant. So if you see a stigma around a certain subject, prove to people कि बुरा नहीं है, and there is scope. If there is scope, that is why it's still surviving, right? Exactly. And I think law essentially, because there is a very heated debate going on of artificial intelligence taking over every single field, I personally believe to a certain extent that social sciences is a discipline and law is a discipline जो कि artificial intelligence नहीं ले सकती. नहीं ले सकते. Exactly. It is one Lawyers, of those AI things. lawyers नहीं हो सकते. It is one of those things, yeah. Exactly. Because humans program computers, they get the knowledge from us. जो हम उनको बताएंगे उनको सिर्फ वो पता है. Yes. They can't devise ideas of their own. Yes. While the human mind, it has no limit. Yes. It is constantly expanding. Exactly. And being a lawyer or being in any other field that is related to this subject, even if you're not like, oh, मैंने LLB करी, even if you go somewhere else, law is an overlapping subject with a lot of things. If you think of it, everything is essentially a business. A hospital is a business, a school is a business, a corporation, an industry is obviously a business. Every single place that you go to, they have a legal team. They have a person who's an advisor. Because when you're surviving in a system, in a community, in a society, you need to work in a structured manner. जैसे पेपर स्ट्रक्चर तरीके से करो, आपको दुनिया में भी कम्युनिटी में स्ट्रक्चर तरीके से चलना पड़ता है. Yes. And lawyers or people who have studied that subject, they're affiliated with that structure. They know how to tackle those things. And as I said before, I do get that confidence because how like adults are having these discussions about politics and stuff like that. I feel like to a certain extent I can take part in those things now. I can talk to my father about those things because I know it. Yes. Because, like a few years back, when you discuss property के papers or stuff like that, I don't know कि उनमें क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, what's the point of all of these. Now I know what goes on in those things. That's brilliant. Yes, that is why. और हम इल्म भी इसलिए हासिल करते हैं. Not because we have to go and give a paper, because we need to learn. Thank you very much, Noor. I cannot Pleasure. thank you enough for this. I cannot thank you. But trust me, you have helped a lot of students. You, not only me, you have helped a lot of students. और वो जब उनके पेपर अच्छे होंगे तो वो आपको दुआएं देंगे. तो इसके साथ ही thank you very much for listening. Thank you. Bye bye.